हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है, इसे डिस्कस करते हैं। पहले हम फिर सोशियोलॉजी के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। इसमें आ जाता है सबसे पहले सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी एंड द अदर साइंसेज। इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे हम सोशियोलॉजी और दूसरी साइंसेज के बारे में। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, स्टीरियोटाइप, डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। इसके बाद है जी स्टीरियोटाइप, वाई सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप, सोशियोलॉजी प्रॉब्लम, सोशल इशूज़, डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल इशू। और इसके बाद आ जाएगा चैप्टर 2 में मेजर सोशियोलॉजिकल perspectives. Sociological perspectives. What is perspective? Evolutionary the evolutionary perspective, the structure functionalist perspective, the conflict perspective, the symbolic perspective. इसके बाद फेमिनिज्म आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में। सबसे पहले तो कल्चर है कि सकाफत हमारी जो है, इसके कल्चर कहते हैं। सकाफत में आप एक शख्स को कैसे परसू कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये शख्स कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ज़ाहिर बात है उसके कल्चर से, वो उसके खाने पीने से, उसके रहने सहने से। कल्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर, रियल कल्चर, आइडियल कल्चर, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, functions of culture, elements of culture, culture diversity, benefits of culture diversity, subculture, basis of subculture, cultural relativism, anthropocentrism, positive effects of anthropocentrism, negative effects of anthropocentrism. इसके बाद आ जाएगा जी सोशलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ सोशलाइजेशन, types of socialization, sources, agencies, socialization through the life course, 8 stages of development, theory of looking glass self by C.H. Pulley, theory of self by C.H. Met. इसके बाद आ जाता है जी आउटलाइन में, जो PU पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की आउटलाइन है। इसमें है जी सोशल इंटरेक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेस, कोऑपरेशन, टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, डिफरेंसेस, कन्फ्लिक्ट्स, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, अकोमोडेशन, फॉर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, assimilation, accommodation and assimilation, differences, theories of social interaction, social construction of reality, ethnomethodologies, and methodology, dramaturgy। इसके बाद आ जाता है सोशल स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सोशल स्टेटस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्टेटस, ascribed status, characteristics of ascribed status, determinants of ascribed status, achieved status, characteristic of achieved status, comparison of achieved and ascribed status, other terminologies, status set, master status, social role, introduction, relationship between status and role set, role conflict, causes of role conflict, solution of role conflict, other terminologies, roles train, role exit। काफ़ी लेंथी सिलेबस है इसका, तकरीबन ये है BS क्लासेस के लिए। इसके बाद चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे जी ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डेफिनेशंस, एसेंशियल्स और एलिमेंट्स ऑफ सोशल ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप, स्टडीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर, वॉलंटरी एसोसिएशन, फीचर्स ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, bureaucracy, definition, characteristics of bureaucracy,
चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम्स, काजेज ऑफ डेविएंस क्राइम, सोशल कंट्रोल, टाइप्स और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, स्टेप्स टू अटेन सोशल कंट्रोल। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वो हैं पास्ट पेपर्स के हैं, पीयू के, और इसके बाद ग्लॉसरी है। चैप्टर 1 है जी सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन अबाउट सोशियोलॉजी? आपका सोशियोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशियोलॉजी? कि सोशियोलॉजी क्या हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज। एक तो नेचुरल साइंसेज होती हैं और दूसरा सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज ये हैं कि जिनमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, जबकि नेचुरल साइंसेज ठोस साइंसेज होती हैं। सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ द सोशल साइंसेज दैट यूजेज सिस्टमैटिक मेथड, यानी सिस्टमैटिक तरीका ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस टू डेवलप एंड रिफाइन अ बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। सोशियोलॉजी जो कि ब्रांच है साइंस सोशल साइंसेज की, ये सिस्टमैटिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन और क्रिटिकल एनालिसिस को डेवलप करने के लिए डेवलप करती है अबाउट अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की परसेप्शन करती है ये। समटाइम्स विद द गोल ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज to the pursuit of social welfare. Its subject matter ranges from the micro level of face-to-face interaction to the macro level of societies at large. सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आमतौर पर जैसे हम वो इसमें शामिल आ जाता है कि आमतौर पर जैसे हम किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, किसी से बात करते हैं, इससे शुरू होकर मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल तक, जो कि सोसाइटीज़ होगी, डिफरेंट सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान में सिंध का कल्चर और है, पंजाब का कल्चर और है, इनकी सोसाइटीज़ और है, इसी तरह। इसके बाद अगली जो चीज़ है इसमें है सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ बोथ मेथडोलॉजी एंड सब्जेक्ट मैटर। इसमें बहुत से मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सब्जेक्ट मैटर के लिए से भी ये एक ब्रॉड डिसिप्लिन रखता है। इट्स ट्रेडिशनल फोकसेस हैव इंक्लूडेड सोशल रिलेशंस, social stratifications, social interaction, culture and deviance, and its approaches have included both qualitative and quantitative research techniques. इसमें हम ये जो चीज़ें हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड डेविएंस और इसके अप्रोचेज़ वगैरह को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम बस सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रखेंगे। As much of what humans do fits under the category of social structure or social activity. Sociology has gradually expanded its focus. Sociology has gradually expanded its focus to such far-flung subjects as the study of economic activity. Sociology में economic activity का भी मुताला किया जाता है। And also health disparities and even the role of social activity in the creation of scientific knowledge, यानी सोशल एक्टिविटीज़ उन सोशल एक्टिविटीज़ का मुताला किया जाता है जो कि इवन साइंटिफिक नॉलेज की क्रिएशन में इस्तेमाल होती हैं। द रेंज ऑफ सोशल साइंटिफिक मेथड्स हैज़ आल्सो बीन ब्रॉडली एक्सपेंडेड। सोशल साइंटिफिक मेथड्स की रेंज भी एक्सपेंड यानी बढ़ा दी गई। द कल्चर टर्न ऑफ द 1970s एंड 1980s थ्रो ब्राउट मोर ह्यूमनिस्टिक इंटरप्रेटिव अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कल्चर इन सोशियोलॉजी। Conversely, the same decades saw the rise of new mathematically rigorous approaches such as social network analysis. Hence, sociology encompasses all social aspects of human life. अब इसका मीनिंग देखते हैं हम, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ये तो इसकी ज़रा डिटेल थी शुरू में, तो चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। द वर्ड सोशियोलॉजी
sociology is a combination of two words given below. sociology दो अल्फाज का मजमूआ है, कम्बिनेशन है, जो कि सोशियस और लोगस है। ये सोशियस जो लफ्ज़ है ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है और लोगस है ग्रीक। सोशियस का मतलब पीपल और लोगस का मतलब टू स्टडी और अंडरस्टैंड। हेंस तो इसका ओवरऑल मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। लोगों के बारे में साइंटिफिक स्टडी हासिल करना। डेफिनेशंस में आ जाते हैं। सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय अ नंबर ऑफ पीपल। सोशियोलॉजी को बहुत से लोगों ने बहुत से तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले तो देखते हैं वार्ड एंड ग्राहम समर की डेफिनेशन। द साइंस ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी, माशरे की साइंस। माशरा किसे कहते हैं? एक सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज persons having almost same nature, same culture। ऐसे लोग जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह का कल्चर रखते हैं उसे सोसाइटी बोलते हैं। इसके बाद FH गिडिंग्स ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना, यानी सोशल फिनोमेना यानी सोशल इकनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ का साइंस है ये। इसके बाद डरकिम ने इसकी तारीफ कुछ यूँ की है कि द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी इंस्टीट्यूशंस की साइंस। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल चेंज, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल चेंज की साइंस। इसके बाद सिमल ने जो अगली डेफिनेशन की है वो है द साइंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी पर्सन्स के दरमियान जो रिश्ता है उसकी साइंस। द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, वेबर ने ये डेफिनेशन की है द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। इसके बाद है द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, पार्क ने ये डेफिनेशन की है कि लोगों का बिहेवियर है वो एज अ कलेक्टिव बिहेवियर, के लोगों का बिहेवियर कैसा है, इसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहेंगे, साइंटिफिक स्टडी को। सम ऑफ द contemporaries define sociology in this way. Can Brown, sociology is the systematic or planned or organized study of human groups and social life in modern societies। इसके बाद विलियम ए कोल ने इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। लॉन रॉबर्टसन इसकी डेफिनेशन यूँ की है sociology is the scientific study of human society and social behavior। According to John J. McKeown's, sociology is the systematic study of human society। Calhoun, Light and Keller, sociology is the study of human society including both social action and social organization। इन तमाम डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नतीजा कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक तकरीबन आलमोस्ट सारी की सारी हमारे सोशल बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूम रही है। हैविंग अ रिव्यू ऑफ ऑल द अबव डेफिनेशंस, it is concluded that sociology is the scientific study of social relations। Ultimately, it is the study of human society। To be more operational, sociology is the scientific study of structure and function of human groups। वो सारी की सारी ये सोशलिज़म कह रहा हूँ, सारी की सारी हमारे सोशल स्ट्रक्चर के गिर्द घूमती है। From all these definitions we conclude that sociology is the systematic study of human behavior।
इसके बाद आ जाता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। Sociology of today is the product of man's old experiences and observations। ले जी, यहाँ एक और नुक्ता नज़र हमें मिल गया, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ टुडे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैंस ओल्ड एक्सपीरियंस। कि सोशियोलॉजी जो है, आज की जो सोशियोलॉजी है, ये आदमी के पहले पुराने एक्सपीरियंस की बिना पर है और ऑब्जर्वेशंस की बिना पर। Sociology, the science of society, was originated as a special discipline in 1836 by Auguste Comte, a French with the name of social physics. Though it is a new discipline, its foundation was laid by Allama Ibn Khaldun from 1332 to 1406, a Muslim historian of Tunis. He named this new science Ilmul Imran। अगरचा ये एक नया सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन को बनाने वाले अल्लामा इब्ने खल्दून हैं, जो कि एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे। इन्होंने इस नई साइंस का नाम इल्मुल इमरान रखा था, जिसमें कि द स्टडी ऑफ पीपल, एंड सेड दैट नो हिस्टोरियन कुड राइट द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन अनटिल ही स्टडी इल्मुल इमरान, सोशल लाइफ ऑफ दैट पॉपुलेशन। उसने कहा था कि कोई भी शख्स उस वक़्त तक किसी कौम की हिस्ट्री को नहीं लिख सकता जब तक कि वो इल्मुल इमरान का मुतालिया ना कर ले। इब्ने खल्दून्स फेमस वर्क ऑन सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन इन हिज मुकदमा। इसका जो फेमस वर्क है, उसने जो सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की है अपने मुकदमा में, वो है द ओल्ड मुस्लिम थिंकर्स वर अल-राज़ी, अल-कुंदी, अल-फरेबी, इब्ने सीना, अल-मवर्दी, इमाम गज़ाली, शाह वलीउल्लाह दहलवी एंड अदर्स। द यूरोपियन ओल्ड सोशल थिंकर्स वर अरिस्टोटल, जिसे अरस्तू भी कहा जाता है, द सोक्रेट्स, द प्लाटो, मैचियावेली, थॉमस होब्स, कैंट एंड अदर्स। Some of the notable thinkers of modern times are Spencer, Pareto, Parsons, Weber, Ingalls, Park, Burgess, Maximal, Masiver, Page, Ogburn, and Martindale. The efforts of these thinkers have developed sociology as a new science. Early, इसके बाद जो आ जाते हैं वो हैं अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। गिवन द social conditions that provoked their inquiry, the early sociologists focused their attention on the forces that hold society together and on the forces that fragment it. Early sociologists जो हैं कि वो फोकस करते हैं on the forces that hold sociology together, जो forces सोशियोलॉजी यानी माशरे को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करती हैं, ये उन पर फोकस करते हैं। इनमें सबसे पहले है ऑगस्टे कॉम्ट। द टाइटल फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी यूजुअली गोज टू द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्ट। कॉम्टे वाज अ समवट eccentric person. He claimed to practice mental hygiene, meaning that he refused to read anyone else's books, but was one of the most original thinkers of his time. It was he who coined the term sociology and who argued in 1838 that the methods of science should be applied to the study of society. यानी ये पहला शख्स था जिसने कि 1838 में
ये बयान दिया कि साइंस द मेथड्स ऑफ साइंस, जो साइंस के मेथड होते हैं उन्हें अप्लाई किया जा सकता है सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। ही इस्टेब्लिश्ड 2 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। उसने सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि है सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिस्टिक्स Social statistics Social statistics refers statistics तो बुक का नेम है। Social statistics refers to problem of order and stability. How and why do societies hold together endure? Social statistics जो है ये प्रॉब्लम के ऑर्डर और स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है, जैसे कि हाउ एंड वाई डू स्टैटिस के क्यों और कैसे माशरा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होल्ड किया हुआ है। सोशल डायनामिक्स रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ सोशल चेंज। जो सोशल डायनामिक्स हैं वो सोशल चेंज की जो प्रॉब्लम है, यानी सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट मेक्स societies confident that the scientific method would unlock the secret? What makes societies change, and what shapes the nature and direction of the changes? Comte was so confident that the scientific method would unlock the secrets of society that he came to regard sociologists as a priesthood of humanity. इसके बाद आ गया हर्बर्ट स्पेंसर। अनदर इम्पोर्टेंट 19th century figure was Herbert Spencer, who devised a theory to explain the problems of social order। ये साइंटिस्ट के नाम है जो कि सोशियोलॉजी में अहम किरदार जिन्होंने अदा किया है। इसके बाद आ जाती है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। The following are the main characteristics of sociology as enlisted by Robert Bierce in his book The Social Order. First of all, sociology is an independent science. Independent यानी ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरी साइंस पर डिपेंड नहीं करती। Sociology has now emerged into an independent science। सोशियोलॉजी को अब इंडिपेंडेंट साइंस समझा जाता है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंसेज लाइक फिलॉसफी और पॉलिटिकल फिलॉसफी और हिस्ट्री। एज इस साइंस की दूसरी ब्रांचेस की तरह डिस्कस नहीं किया जाता, जैसे कि फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह की साइंस वगैरह की तरह इसे डिस्कस नहीं किया जाता। As an independent science, it has its own field of study, boundary and methods। क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इसलिए ये अपनी बाउंड्रीज हैं, इसकी अपने मेथड्स हैं और इसकी स्टडी की फील्ड ही अलग है। सोशियोलॉजी इज़ अ नंबर 2 पे है, सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस। Sociology belongs to the family of social sciences and not to the family of physical sciences। सोशियोलॉजी जो है वो बिलोंग करती है सोशल साइंसेज से, rather than फैमिली ऑफ फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज यानी फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री वगैरह की तरह ये नहीं है, ये है सोशल साइंस। एज अ सोशल साइंस इट concentrates its attention on man, his social behavior, social activities and social life। As a member of family of social sciences, it is intimately related to other social sciences like history, political science, economics, psychological, anthropology।
सोशल साइंस होने की हैसियत से ये अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाती है। ये आदमी को इसके बिहेवियर और इसकी सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल लाइफ को तवज्जो का मरकज़ बनाती है। एज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सोशल साइंसेज, ये इंटीमेटली रिलेटेड है दूसरी सोशल साइंसेज लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल वगैरह के। इसके बाद नंबर 3 पे सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। Sociology confines itself to statement about what is, not what should be or ought to be। यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो ये बताती है कि ये क्या है, और नॉट यानी नहीं, ये नहीं कहती कि इसे कैसा होना चाहिए और क्यों, कैसे इसको हम ऐसा बना सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ यही बताती है कि ये क्या है। As a science, sociology is necessarily silent about questions of value. It does not make any kind of value judgments. Its approach is neither moral or nor immoral but moral. It is ethically neutral. इसके बाद नंबर 4 पर है जी, sociology is a relatively an abstract science and not a concrete science. This does not mean the sociology is an art and not a science. Nor does it mean it is unnecessarily complicated and unduly difficult. It only means that sociology is not interested in concrete manifestations of human events. It is more concerned with the form of human events and their patterns. At number 5, we discuss about sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. Sociology tries to find out the general laws or principles about human interaction and association, about the nature, form, content, and structure of human groups and societies. It does not study each and every event that takes place in society. It is not possible also. It tries to make generalizations on the basis of study of some selected events. And number 6, sociology is a general science and not a special social science. The area of inquiry of sociology is general and not specialized. It is concerned with human interaction and human life in general. Other social sciences like political sciences, history, economics also study man and human interaction, but not all about human interaction. They concentrate their attention on certain aspects of human interaction and activities and specialize themselves in those fields. Sociology studies human activities in a general way. At number 7, finally, sociology is both a relational. Yeah, finally, sociology is both a rational and an empirical science. There are two broad ways to approach to scientific knowledge. One known as empiricism is the approach that emphasizes experience and the facts and that results from observation and experimentation. The other known as rationalism stresses reasons and the theories that result from logical inference. It is clear from the above sociology is an independent, a social, a categorical, a pure and abstract, a generalizing, both a rational and an empirical and a general social science. इसके बाद आ जाएगा ये difference among the sociology and other social sciences. Relationship of sociology with other social sciences is given below.
नंबर 1 पे है जी सोशियोलॉजी एंड इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स जिसमें कि हम ये स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं इकनॉमिक्स में। इकनॉमिक्स जो है ये सोशल लाइफ से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन of wealth, goods and services. We will discuss about these things. चलो शुरू करते हैं। Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Economics is concerned with the social life of people in the special field of production, distribution and consumption of wealth, goods and services. In these three processes, social life of man in various forms of goods and services is required. With the process of social interaction, various functions are performed in which economic functions commonly operate. Without social contact, social groups cannot develop. यानी सोशल कॉन्टैक्ट्स के पास सोशल कॉन्टैक्ट्स के बगैर सोशल ग्रुप्स को डेवलप नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक नॉर्म्स आर इवॉल्व्ड लेटर फ्रॉम ग्रुप कॉन्टैक्ट। These norms include the rules of business, earning, trade, and banking. From economic contact, the social institutions of economy is developed. It is concluded that the functions of the economic institution are developed and governed by the norms of society. इन सब ये नतीजा किया जा सकता है कि जो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप और गवर्न किए जाते हैं सोसाइटी की नॉर्म्स से। सोशल स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज नॉर्म्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज सोशियोलॉजी। The functions, conditions and problems of other economic institutions are the development of the social life detailed by the dealt by the sociology. When the laborers of a factory go on strike, the sociologists come in and resolve the problem by arbitration. Here the study of economic problem falls in sociology. The study of poverty, unemployment, inflation is equally important in economics and sociology. यानी जो स्टडी है अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, गरीबी की, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स Sociology of economics is an area of specialization in sociology. Common points, topics of attention are unemployment, inflation, human resources development, human resources management, labor welfare, human migration, brain drain, labor unions. Sociology and political science. Political science deals with the social life of people in their attempt to govern themselves. The distribution of power and authority among individuals on the basis of social positions in society and exercising social control are the major functions of political sciences. Sociology also deals with the structure and functions of governing institutions and agencies of social control. Moreover, status and role are determined and distribution according in cultural values of that society. It is the norms of society which shape our values and institutions. The study of such things like values, norms, and the institutions is included in the major fields of society of sociology. Without study of these concepts, the study of the institutions of politics is not possible. Common focus of attention: rise and fall of government, election,
propaganda, political change, and relationship between society and state are important in studying sociology and political science. गवर्नमेंट में उतार चढ़ाव, इलेक्शन, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स में चेंज और सोसाइटी और स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में. देयर आर सम अदर कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंसेज सच एज. ये चंद टॉपिक्स हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंसेस के लिए बहुत ही अहम हैं. these are these topics are such as war, mass movements, revolution, government control, public opinion, propaganda, leadership, elections, voting, political minorities, social legislation, social legislations like civil code and the like may be cited here as example. Sociology of political science is also an area of study in sociology. Number 3. Sociology and history. In history, the form of expression is often literary as well as scientific. It is based on written records of unique events like military conflicts, political events, the activities of roles, the economic changes, and more recently the social changes. The historical record is a source of data for historical methods used in sociology. Past, present, and future events are related to one another with one or more causal factors in a certain situation. This cause and effect relationship in the study of events is a logical method used in determining the cause of social problems in sociology. Historical methods used in social research is itself an integration of relationship with sociology. Historical sociology is again an area of studying the in sociology. At number 4, sociology and anthropology. Anthropology is the study of man. In this subject we study number 1, prehistory, linguistics, physical anthropology, archaeology, and cultural anthropology. The main aim of these areas is to study the culture of primitive societies, but the recent trend is to study the modern technological changes in various cultures. In sociology, the emphasis is laid upon the study of structure, function, and problems of culture in society. Study of culture is a significant part of sociology, whereas culture is the subject matter of cultural anthropology. Social and cultural anthropology is an independent branch of sociology and anthropology. At number 5, sociology and psychology. Psychology is the scientific study of human behavior as an individual, while sociology is the study of human behavior as a group, like societies, culture of societies. Psychological is the field of which deals with the human nature or human activity in general. Mental temperament, personality traits, and rising of the self are few of the psychological areas of studying individual. Socialization process in sociology is one of the major aspects of studying human personality, conforming or non-conforming to the terms of the culture. Several psychological theories like Dollard's frustration leads to aggression and others are the important applications in studying deviant behavior in sociology. The common areas of study in which psychology and sociology interplay their parts is called social psychology,
common topics of interest for both the sciences. Sociologists and social psychologists may have to study together certain common topics such as individual disorganization, crime, juvenile, juvenile delinquency, social disorganization, public opinion, propaganda, leadership, war, conflicts, socialization, suggestion, imitation, fashion, and so on. Number 6. Sociology and statistics. According to Lundberg, all phenomena can be quantified. The importance of numbers is evident from the verdict in social phenomena. Statistics provide the researchers with methods and techniques of measuring qualitative aspects of the event. Also, in sociological studies, we collect data, manipulate, and interpret statistical. Hence, statistics for social scientists is responsible for promoting the causes of scientific approach in the subject. At number 7, sociology, criminology, and education. Sociology covers the areas of criminology in which etiology of crime and methods of their removal are studied. With education, it has again a closer relationship in the sense that education is a relational method of making people useful members of society in teaching norms of cultures to individuals. Education gains an important hand in the transmission of cultural values to the succeeding generation. इसके बाद है जी सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस स्टीरियोटाइप. कॉमन सेंस. सबसे पहले कॉमन सेंस है क्या? कॉमन सेंस कहते हैं कि लोगों की रूटीन की नॉलेज जो ये अपने करीबी दुनिया और एक्टिविटीज़ के मतलब रखते हैं. डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ है कि कॉमन सेंस इज़ डिफाइंड एज routine knowledge that people have of their everyday world and activities. It is generally based on what may be called naturalistic or individualist explanation. It is taken for granted knowledge. It is unexamined. Common sense help sociologists in hypothesis building. Common sense, often just known as sense, is sound practical judgment concerning everyday matters or basic ability to perceive, understand, and judge in a manner that is shared by nearly all people. Similarly, in English, there are different shades of meaning, implying more or less education and wisdom. Good sense is sometimes seen as equivalent to common sense and sometimes not. Another definition of common sense is that good sense and sound judgment in particular matters. It is all a matter of common sense. इसके बाद common sense is the knowledge that people use to make judgments and navigate their way around the world. कॉमन सेंस एक नॉलेज है जो लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में परसीव करते हैं
On the basis of above, we can summarize that common sense is defined as routine knowledge that people have of their everyday world and activities. It is generally based on what may be called naturalistic and individualist explanation. It is taken for granted knowledge. It is unexamined. It provides raw material for sociological investigations. Considerations in sociology are framed by taking into account the common sense knowledge. इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि from a commonsensical point of view, we may conclude that poverty is the result of lazy behavior. But according to cause and effect research of sociology, which might conclude that poverty is the result of structural inequalities. Difference between common sense and sociology. एग्जाम्पल में पहले बात कर रहे हैं फ्रॉम अ कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी मे कंक्लूड दैट पोवर्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ लेजी बिहेवियर। कॉमन सेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पोवर्टी यानी कि गरीबी ये रिज़ल्ट है लेज़ी बिहेवियर यानी सुस्त बिहेवियर का, मेहनत ना करने का। लेकिन सोशियोलॉजी की कॉज एंड इफ़ेक्ट रिसर्च के मुताबिक पोवर्टी जो है वो रिज़ल्ट है इनइक्वालिटीज़ यानी असासों की नामुनसफ़ाना तकसीम का, इसी तरह स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ का। डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन सेंस टेक्स क्यूज फ्राम व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस। जो कॉमन सेंस है वो क्यूज लेती है कि बैरूनी हालात कैसे हैं किस चीज़ के। वाइल सोशियोलॉजी लुक्स फॉर इंटरकनेक्शन एंड कैजुअल एक्सप्लेनेशन, ही अंदरूनी हालात का भी जायज़ा लेती है सोशियोलॉजी है जो। कॉमन सेंस प्रमोट्स स्टीरियोटाइपिकल बिलीव्स बट सोशियोलॉजी यूजेस रीजन एंड लॉजिक। स्टीरियोटाइपिकल बिलीव्स के लोग किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी गुमान कर लें, इसे स्टीरियोटाइप बिलीव कहते हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये बेस है अपॉन एविडेंस यानी सबूतों पर बेस है, एंड लॉजिक रीज़न होनी चाहिए किसी काम की और लॉजिक होना चाहिए। कॉमन सेंस इज़ बेस्ड अपॉन assumptions while sociology is based upon evidences. Empirical testing has no place in common sense knowledge, whereas sociology pursues with an empirical orientation. Common sense knowledge are personal, but sociological knowledge results into generalization. Common sense promotes status quoism, whereas sociology is change-oriented. Common sense knowledge may not be coherent, but sociological knowledge is generally coherent and organized. Sociology as a discipline is more than common sense. Sociology is a method of inquiry that requires the systematic testing of beliefs against evidence. Sociologists therefore make determining whether specific ideas are fact or fiction their job. इसके बाद स्टीरियोटाइप। Stereotype is a simplified description applied to every person in some category.
a widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing is called stereotype. A stereotype is a generalized belief about a particular category of people. That's the explanation, and it is an expectation that people might have about every person of a particular group. यानी कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं जो लोग लगा लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से लोगों के. द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैन वेरी. इसकी टाइप्स हैं जो एक्सपेक्टेशंस की वो वेरी यानी डिफरेंट हो सकती हैं. इट कैन बी फॉर एग्जांपल एन एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रुप्स पर्सनैलिटी. किसी ग्रुप के लोगों की पर्सनैलिटी के मतलब एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं. प्रेफरेंसेस हो सकती हैं यानी उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं उनके मतलब अपीयरेंस और एबिलिटी. Appearance or ability के मतलब stereotypes are sometimes overgeneralized, inaccurate and resistant to new information. यानी कि stereotype कई मरतबा overgeneralized, inaccurate गलत हो सकती है, but can sometimes be accurate और कुछ बाज़ औक़ात ये दुरुस्त भी हो सकती है. While such generalization about groups of people may be useful when making quick decisions, they may be erroneous when applied to particular individuals and are among the reasons for prejudicial attitudes. Stereotypes. Stereotypes are characteristics imposed upon groups of people because of their race, nationality, and sexual orientation. These characteristics tend to the oversimplifications of the groups involved, and even if they seem positive, stereotypes are harmful. Why sociology is not a stereotype? John J. McConis has given three reasons which clearly indicate that there is no relationship between sociology and stereotype. According to him, sociology makes generalization about social patterns, 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 but these generalizations are not stereotypes according to given reasons. First, sociologists do not carelessly apply an generalization to everyone in a category. Second, sociologists make sure that a generalization squares with the available facts. And third, sociologists offer generalization mindedly with an interest in getting at the truth. Social problem. Walsh and Furley define social problem a deviation from the social ideals remediable by group efforts. Weaver defined social problem as a situation in a dynamic society believed to be a threat to or an infringement upon a social value and considered capable of amelioration or elimination by appropriate collective actions. Frank L.K. A social problem. According to Frank L.K., a social problem then appears to be any difficulty or misbehavior of a family, large number of persons which we wish to move or correct. H. A. Phelps के मुताबिक social problems are abnormalities
abnormalities in social relationship which manifest themselves when people live in groups which are considered dangerous and intolerable and which must be eliminated to safeguard the society. A condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable and about which it is felt that something can be done through collective social action. इसके बाद components or characteristics of social problem. Social problem is that condition which is disliked by majority of the people. यानी कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी हालत है जो कि डिसलाइक की जाती है, पसंद नापसंदीदा है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों के ज़्यादा ग्रुप्स से, यानी कि लोगों के ज़्यादा ग्रुप इसे डिसलाइक करते हैं. Academicians and scholars of other segments of life are writing on different aspects of problem. The problem can be solved by collective action instead of individual. यानी कि किसी प्रॉब्लम को एक ग्रुप में ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है कि बजाय उसे एक अकेला बंदा हैंडल करे. Majority of the people is am about it and is am about it and being affected each other directly or indirectly. Complexity 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 of the problem is very much and difficult to understand. Poverty, crime and violence, child labor, overpopulation and epidemics are the major social problems of Pakistan because these social problems cannot be controlled by few individuals or groups, rather required collective actions by all segments of the society. इसके बाद है social issues. A social issue or problem is an issue that has been recognized by society as a problem that is preventing society from functioning at an optimal level. सोशल इशू जो कि एक प्रॉब्लम है, ये तब पैदा होती है जबकि एक सोसाइटी इसे रिकॉग्नाइज कर ले और ये सोसाइटी को ख़ास किस्म के काम परफॉर्म करने से रोके. It is important to understand that not all things that occur in society are raised to the level of social problem. Four factors have been outlined that seem to characterize a social issue or problem. These included a social issue is an issue that relates to society's perception of people, personal lives. Different societies have different perceptions, and what may be normal behavior is one society may be significant social issue in another society. Social issues are distinguished from economic issues. Some issues have both social and economic aspects, such as immigration. There are also issues that don't fall into either category, such as wars. The differences between social problem and social issue.
Social problems are moral and ethical in nature and need to be solved on permanent ground, whereas social issues are points or matters of discussion or debate or dispute on legal and moral basis and matter of public concern. Social problems are Social problems are permanent in nature and last until they are solved, whereas social issues are temporary in nature, may last for weeks or months. यानी सोशल प्रॉब्लम्स को जब तक कि आप हल ना करेंगे वो मौजूद रहेंगी, वाइल सोशल इश्यूज़ जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और ख़ुद ब खुद थोड़े कुछ हफ्तों मंथ्स या साल में ख़त्म हो जाते हैं. Social problems affects large population or segments of society, whereas social issues don't affect large number of population directly. यानी कि सोशल प्रॉब्लम बहुत सी पॉपुलेशन को, सोसाइटी की बहुत सी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन सोशल इश्यूज़ बहुत से कम लोगों को अफेक्ट करते हैं. सोशल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज फोकस ऑफ attention of public, academia and policy makers, while social issues are focus of attention in print, electronic and social media. Example of social problems are crime, poverty, child abuse. Examples of social issues are kidnapping of highly important persons, divorce of showbiz couple. Descriptive questions has been defined. Sociology also explains its characteristics, explain the relationship of sociology with other social sciences. Define sociology also explain sociology is different from common sense and stereotype. इसके बाद है जी मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. चैप्टर नंबर 2 है जी मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स सबसे पहले हैं क्या. Before explaining theoretical perspective, it is necessary to introduce what perspective is. A perspective is a broad assumptions about society and social behavior that provides a point of view for the study of specific problems. There are four of these general perspectives in modern sociology: evolutionary, functionalist, the conflict, and the interact and the interactionist perspectives. Most of the sociologists are guided in their work by a major theoretical perspective. Ken Brown has given the examples to understand the perspective. For example, imagine that there are 5 people looking at the same busy shopping street: a pickpocket, a police officer, a road sweeper, a shopper, and the shopkeeper. The pickpocket sees wallets sticking out of pocket or bags and an opportunity to steal. यानी कि 5 लोग अगर एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं, लाइक अ पिक पॉकेट यानी एक जेब कतरा पुलिस ऑफिसर, एक रोड साफ़ करने वाला, एक ख़रीदारी करने वाला और 5वां दुकानदार.
सबसे पहले जेब कतरा जो होगा उसकी नज़र लोगों के बटुओं पर होगी और वो इनको चुराने के बारे में सोचेगा। और पुलिस ऑफिसर देखेगा कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। और रोड स्वीपर है वो रोड को साफ करने के बारे में सोच रहा है। शॉप पर जो शॉपिंग करने वाला है वो कंज्यूमर गुड्स को देख रहा है, जबकि शॉपकीपर ओनली पोटेंशियल कस्टमर्स को देख रहा है। लाइक द पुलिस ऑफिसर सीज पोटेंशियल क्राइम एंड disorder, the road sweeper litter and garbage left by everyone else. The shopper the shopper might see windows full of desirable consumer goods to buy, and the shopkeeper sees only potential customers. All are viewing the same street but are looking at different aspects of that street. What they seeing different things, but you cannot really say any of their views is more correct than other. Though you might think some views provide a more truthful, rounded and full description of the street than others do. ये वो 5 बंदे हैं फिगर में दिखाया। People may view the same scene from different perspectives. The evolutionary perspective, देखने का नज़रिया। सबसे पहले देखने का नज़रिया। This is the earliest perspective in sociology based on the work of August Comte Spencer. It focuses on how human societies originate and grow over a period of time. After a few decades, it fell from favor and is now once again becoming fashionable. Sociologists using this perspective look for patterns of change and development appearing in different societies in different times. The structure functionalist perspective. According to McKinney's functionalist perspective is a framework for building theory that sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. The basic principles of structural functionalism can be comprehended in three simple terms: maintenance of social stability, collective functioning, and social evaluation. Major assumptions of structural functions are: number one, assumption society is a combination of different parts like human body. The functionalist perspective in sociology is a view of society that focus on the way various parts of society have functions or positive effects that maintain the stability of the whole. The perspective draws its original inspiration from the work of Herbert Spencer and Emil Durkheim. Spencer compared societies to live organisms. Any organism has a structure that is a set of interrelated components, such as a head, limbs, a heart, and so on. Each of these parts has a function that is a positive consequences for whole system. In this case, a living organism. Assumption number two: each part of the society has some specific functions. In the same way, Spencer argued the society has a structure. Its interrelated parts are the social institutions, family, religion, the military, and so on. Ideally, each of these components also has a function that contributes to the overall stability of the social system. Modern structural functionalism, usually called functionalism, does not press the analogy between a society and an organism, but it does retain the same general idea of society as a system of interrelated parts. Assumption number three: all parts of the system are interrelated.
All parts of the system are interrelated and interdependent. All parts of the system are interrelated and interdependent. Each part of the society are interrelated and interdependent on each other in terms of their functions, functional needs, and maintaining social order in society. Assumption number 4: a society tends to be organized and stable system. Functionalist theory implies that society tends to be an organized, stable, well integrated system in which most members agree on basic values. Under normal conditions, all the elements in the social system, such as the schools, the family, and the state, tend to fit together, with each element helping to maintain overall stability and balance equilibrium in the society. Number 5 पे is slow and gradual social change in positive. In the functionalist view of society has an underlying tendency to be in equilibrium or balance. Social change is therefore likely to be disruptive disruptive unless it takes place relatively slowly, because changes in one part of the system usually provoke changes elsewhere in the system. Sudden and rapid changes caused social disruption in society. Main focus of the functionalists is on social order, stability, and equilibrium in society. They believe that whenever something becomes absolutely dysfunction, automatically removed by the society. If sometimes if something exists in society, no matter how negative it is, it will be definitely be functional for the society. The conflict perspective. Conflict perspective is a framework for building theory that sees society as an arena of inequality that generates conflict and changes. Assumptions. Assumption number 1: views of society that focuses on social process of tension, competition, and change. The conflict perspective in sociology is a view of society that focuses on social process of tension, competition, and change. The perspective derives its inspiration from the work of Karl Marx, who saw the struggle between social classes as the engine of history and main source of change. Number 2 assumes that societies are in a constant state of change in which conflicts is a permanent feature. Conflict theorists Theorists assumes that societies are in a constant state of change in which conflict is a permanent feature. Conflict does not necessarily mean outright violence. It includes tension, hostility, competition, and disagreement over goals and values. This conflict is not an occasional event that disrupts the generally smooth working of society. It is a continuing and inevitable part of social life. Assumption number 3: conflict in the society has positive effect as well. Conflicts theorists do not see social conflicts as necessarily destructive, although they admit that it may sometimes have that effect. They argue that conflict can often have positive results. It binds groups together as they pursue their own interests, and the conflict among competing groups focuses attention on social problems and leads to beneficial changes that might otherwise not have occurred in the way. Social movements such as those for women's rights or against nuclear power become an important source of change. The changes caused by the social conflicts prevent social society from stagnating. Assumption number 4: society is composed of different groups competing for power and resources. The conflict perspective views society as composed of different groups and interests competing for power and resources. The origins of the conflict perspective can be traced to the classes works of Karl Marx.
Assumption number 5, these are two groups in the society: haves, have not. Conflict according to Marx it between a wealthy and powerful group who owns and controls the means of production and poor labor who are exploited by the bourgeoisie. According to Marx, this conflict is between haves and haves not. Conflict between these two classes, according to Marx, is a source of social change in society. This change will took place after the other overthrow of the bourgeoisie by प्रोलेटरेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।